मैं वाल्मीकि रामायण जी का युद्ध कांड का आज मैंने भोग डालना है। ये वाल्मीकि रामायण बहुत ही लेंथी है, बहुत लंबी है। इसके साथ जो कांड है, ये 6वां कांड है, युद्ध कांड 128 सर्ग है। 126 का लिया है, 127 और 128 करके मेरा युद्ध कांड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने उत्तराखंड पढ़ना है वाल्मीकि रामायण जी का, क्योंकि मैं पहले पाठ करने से पहले मैं संकल्प करता हूँ, सोच चुकता हूँ कि मैंने वाल्मीकि रामायण जी का पाठ यूट्यूब पर ऑनलाइन होकर पढ़ना है, गूगल से देखकर। और बीच में कई अध्याय नहीं मिले, मैंने फिर वो सारा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद उत्तराखंड, अभी मैं 2 अध्याय मेरे रहते हैं लास्ट वाले, 127 सर्ग और 128 सर्ग। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 127। परिचय। भरत राम के आगमन के बारे में हनुमान से खुशखबरी सुनने के बाद शत्रुघ्न को बुलाते हैं और उन्हें अयोध्या शहर में राम के स्वागत के लिए उचित व्यवस्था करने की आज्ञा देते हैं। भरत राम को प्राप्त करने के लिए नंदीग्राम के लिए अन्य सभी के साथ प्रस्थान करते हैं और हवाई कार नंदीग्राम में उतरी। भरत राम और अन्य लोगों का स्वागत करते हैं, उन्हें गले लगाकर उन्हें खुशी से नमस्कार करते हैं। राम भी अपनी उन सभी माताओं को नमस्कार करते हैं जो उन्हें प्राप्त करने आती हैं। फिर भरत राम की लकड़ी की चप्पल लाते हैं और उन्हें राम के पैरों के नीचे रख देते हैं। राम पुष्प को आज्ञा देते हैं जो हवाई कार कुबेर के पास लौटने के लिए है, धन के स्वामी जिनके पास ये मूल रूप से था। हनुमान से महान प्रसन्नता का समाचार सुनकर वास्तव में वीर साहसी और शत्रुओं का नाश करने वाले भरत ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी। वह भी इस समाचार से प्रसन्न हुए। अच्छे आचरण वाले लोग अपने परिवार देवताओं की पूजा करें, शहर में मीठे सुगंधित फूलों से और वाद यंत्रों की संगत से पूजा करें। चारणों को स्तुति और प्राणों प्राचीन कथाओं ब्रह्मांड शास्त्र आदि से युक्त के गायन निपुण होने के दें। साथ ही सभी पांडित्य आवाज यंत्रों के प्रयोग में कुशल सभी एकत्र हुए दरबारी, रानी, माताएं, मंत्री, सेना पुरुष और उनकी पत्नियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लड़ाई वर्ग के सदस्य के साथ व्यापारियों और कारीगरों के संघों के नेताओं के साथ साथ उनके सदस्य भी राम के चंद्रमा जैसे चेहरे को देखने के लिए बाहर आते हैं। भरत के वचन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने एक साहब लाकर हजारों की संख्या में मजदूरी करने वाले मजदूरों को ग्रोहों में बांटकर उन्हें इस प्रकार आदेश दिया। नंदीग्राम से अयोध्या तक के मार्ग में गड्ढों को समतल किया जाए, उबड़ खाबड़ और समतल स्थानों को समतल किया जाए। पूरी जमीन को बर्फ सोने के पानी से छिड़कने दो। कुछ अन्य लोगों को इसे सूखे अनाज और फूलों से बिखेरने दो। अयोध्या उत्कर्ष नगरी में सड़कों को झंडों से आच्छादित किया जाए। सूर्य के उदय होने तक घरों, सड़क के किनारे को सजाया जाए। सैकड़ों लोगों को मुख्य शाही राजमार्ग पर 5 सुगंध रंगों के साथ और मालाओं की पंक्तियों के साथ साथ फूलों को भी छिड़कने दे। शत्रुघ्न की उस आज्ञा को सुनकर धृष्टि, जंत, विजया, सिद्धार्थ, अर्थशास्त्री, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र हर्ष होकर आगे बढ़े। कुछ लोग हजारों की संख्या में सुशोभित हाथियों पर सवार होकर बैनर ले जाते हैं। कुछ अन्य लोग उन हाथियों के साथ साथ सुनहरी कमर से सुजित मादा हाथियों पर सवार थे। उत्तम रथ योद्धा अपने अपने रथों में वेग से आगे बढ़े। चुने हुए घोड़ों पर योद्धा अभी भी हजारों की संख्या में श्रेष्ठ है। बैनर और पताका लिए हुए, भाला और फंदा लिए हुए, साथ ही हजारों पैदल सैनिकों से घिरे हुए आगे बढ़े। तब मृतक दशरथ की सभी पत्नियां
कुशल्या और सुमित्रा को सामने रखकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर निकल पड़ी। कई साहब सभी नंदीग्राम पहुंचे। अपने भाई राम के लकड़ी के सैंडल को अपने सिर पर रखकर श्वेत छत्र राम के लिए प्रेत जो श्वेत से शोभा था और सोने से सजी 2 श्वेत मूछे राजाओं के योग्य ब्राह्मणों के पुरोहितों के साथ व्यापारियों और कारीगरों की मंडली, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, जो अपने हाथों में माला और घंटी के कार की मिठाइयां लिए हुए सलाहकारों से गिरे हुए हैं, शंख और कैतरी नगाड़ों की ध्वनि से उत्साह है। मंत्र मुग्धों द्वारा विधिवत प्रशंसा की जाती है। महान आत्मा भरत उसके भाग के लिए जिसका मन धारणा में लगा हुआ था, जो पुण्य के रहस्य से अच्छी तरह से वाकिफ था, जो उपवास के मध्यम से क्षीण था, जो दुखी महसूस कर था, जो पेड़ों की छाल और एक काले मिर्च की खाल में लिपटा हुआ था, जिसने आनंद का अनुभव किया। पहली बार अपने भाई के आने की खबर सुनकर तो पहले ही चला गया अपने मंत्रियों के साथ राम से मिलने के लिए। रथ पहियों की रिमज की खड़खड़ाहट और पलंगों और नगाड़ों की गड़गड़ाहट से मानो पृथ्वी घोड़ों की टापों की आवाज से कांप रही थी। अयोध्या का पूरा शहर सचमुच नंदीग्राम पहुंच गया। भरत ने चारों ओर देखकर हनुमान से इस प्रकार कहा, वास्तव में मुझे आशा है कि बंदरों की खासियत का गठन करने वाली चंचलता का आपके द्वारा सहारा नहीं लिया गया है, क्योंकि मैं वास्तव में राम को नहीं देखता, जो कुकतस के योग्य वंशज और रोधियों का नाश करने वाले हैं। जब भरत ने ये बातें कही तब हनुमान ने मोह करनी भरत को उनके अर्थपूर्ण शब्दों से इस प्रकार उत्तर दिया, मानो वे स्थिति से अवगत करा रहे हों। आनंदित वानरों की भयंकर गर्जना सुनाई दे रही है, क्योंकि वह मार्ग में उन वृक्षों को देख रहे हैं जो निरंतर फल देते हैं, पुष्पों से सुशोभित है, मधुमक्खियां पीती हुई शहद से बहती हैं, गूंजती गूंजती है। ये सब कृपा के कारण है, ऋषि भरद्वाज का है। भरत, शत्रुओं का नाश करने वाले देवराज इंद्र द्वारा एक वरदान दिया गया था, जिसके आधार पर भरद्वाज ने आपकी पूरी सेना के साथ आपको पहले सभी गुणों से भरपूर शिक्षा प्रदान किया था। मुझे लगता है कि उक्त वानरों की सेना नदियों को पार कर रही है। गोमती धूल के बादल को देखें, सारा वृक्षों के ऊपर की ओर झाग फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि बंदर सारा वृक्षों के सुंदर पुण को हिला रहे हैं। दूर से वह बहुत प्रसिद्ध वायुयान दिखाई देता है, जो चंद्रमा की तरह चमक रहा है। पुष्प नाम अद्भुत वायुयान का निर्माण उनकी बुद्धि से विश्वकर्मा देवताओं के एक वास्तुकार जिन्हें यहाँ ब्रह्मा के रूप में संदर्भित किया गया है द्वारा किया गया था। उनकी रचनात्मक प्रतिभा, ये अद्भुत हवाई कार विचार की गति के साथ जो महान आत्मा राम को ले जा रही है और उगते हुए सूर्य की तरह चमक रही है, सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की कृपा से धन के स्वामी कुबेर की है। कौन उसे दिया? एक ही हवाई कार में भी राम और लक्ष्मण भाई सीता के साथ तेजस्वी सुग्रीव और राक्षस विभीषण है। इस बीच लो राम आओ शब्द जोर से बोले गए और महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के मुंह से खुशी का एक कोलाहल आकाश को छू गया। और सब लोगों ने अपने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों से उतरकर भूमि पर खड़े होकर आकाश में चंद्रमा की भांति देखा कि राम रथ पर आसीन है। अति हर्षित भरत ने हाथ जोड़कर राम की ओर मुख करके उनका पूजन किया, उनका यथोचित स्वागत किया। दिव्या वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा अपनी बुद्धि से बनाए गए हवाई रथ में बैठे हुए अपनी लंबी और बड़ी आंखों वाले राम अपने हाथ में वज्र धारण करने वाले दूसरे इंद्र की तरह चमक रहे थे। श्रद्धा से झुके हुए भरत ने तब राम को प्रणाम किया, जो भाई जहाज के अग्रभाग में खड़े थे और मेरू पर्वत सूर्य के समान चमक रहे थे। राम की आज्ञा से वह उत्तम गति वाला और हंसों के चित्त से युक्त उत्तम वायुयान पृथ्वी पर जा गिरा। प्रसन्न होकर उस वायुयान पर चढ़कर राम के पास आने पर सच्चे प्रकर्मी भरत ने फिर उनका अभिवादन किया। राम ने अपने आसन से पूरी तरह उठकर उस भरत को, जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया था, अपनी गोद में रखकर प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लिया।
तत्पश्चात हर्षद भरत शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण और सीता के पास पहुंचे। फिर उन्होंने सदापुर प्रणाम किया और उनके नाम की भी घोषणा की। फिर भरत ने सुग्रीव, जावान, अंगद, मेंदा, बिंदा, नीला और ऋषु को गले लगा लिया। उन्होंने सुषेण, नहल, गवक्ष, गंधमादन, सर्व, पनासा और आसपास के वानरों को भी गले लगा लिया। तब उन वानरों ने जो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं मनुष्यों का रूप धारण किया और हर्षित होकर भरत के कल्याण के बारे में पूछा। तब परम तेजस्वी दशपुत्र भरत और शेष गुणवानों में शेषवान सुग्रीव का आलिंगन करके उनसे बोले इस प्रकार, हे सुग्रीव, हम चारों के लिए आप पांचवें भाई हैं। स्नेह से मित्र गुण होता है, जबकि द्वेष शत्रु का गुण है। तत्पश्चात भरत ने भीषण से निम्न प्रकार के वचन कहे, धन्यवाद, राम के साथी के रूप में आपके द्वारा एक बहुत कठिन कार्य पूरा किया गया। फिर वीर शत्रुघ्न ने लक्ष्मण सहित राम को अपना प्रणाम किया और विनम्रता से झुककर सीता के चरणों में अपनी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। शोक से दुर्बल हो गई माता के पास जाकर राम ने प्रणाम करके माता के हृदय को हर्ष करते हुए उनके चरणों को प्रणाम किया। सुमित्रा, विख्यात कैकेयी और उनकी सभी माताओं को प्रणाम करते हुए राम तब पुजारी वशिष्ठ के पास गए और श्रद्धा में अपना प्रणाम किया। हाथ जोड़कर अयोध्या के सभी नागरिकों ने राम से कहा, आपका स्वागत है हे महाबाहु, हे कौशल की प्रसन्नता बढ़ाने वाले। राम ने नागरों को द्वारा पकड़ी गई उन हजारों जुड़ी हुई हथेली को खिले हुए कमल पुष्पों के रूप में देखा। गुण के ज्ञाता भरत ने राम की उन खास बातों को लेकर स्वयं उन्हें पुरुषों के स्वामी राम के पैरों के नीचे रख दिया। हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भरत ने राम से इस प्रकार कहा, आपका ये सारा राज्य जो मेरे पास जमा के रूप में रखा गया है, मेरे द्वारा आपको वापस किया जा रहा है। मेरे जीवन ने आज अपना दिशा पूरा कर लिया है और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई है, जिसमें मैं आपको उसके राजा को अयोध्या वापस आते हुए देखता हूँ। आप अपने खजाने, अन्न भंडार, अपनी आत्मा के महल की समीक्षा करें, सब कुछ मेरे द्वारा 10 गुना बढ़ा दिया गया है। उस भरत को अपने भाई के साथ स्नेह पूर्व इस प्रकार कहते देख विभीषण, दैत्य और वानरों ने अश्रु बहाया। प्रसन्न होकर भरत को गोद में बिठाकर राम अपनी सेना बंदरों रीछों की को लेकर उस वायुयान में भरत के आश्रम में चले गए। अपनी सेना के साथ भरत के आश्रम में पहुंचकर राम फिर हवाई जहाज के अग्रभाग से उतरे और कुछ समय के लिए जमीन पर खड़े हो गए। फिर राम ने अपने हिस्से के लिए उस से कहा, भगवान कुबेर के लिए एक परिवहन के रूप में सेवा करो, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। इस प्रकार राम द्वारा अनुमति दी गई। वह हवाई कार उसके बाद उत्तरी दिशा की ओर बढ़ी ताकि धन के स्वामी कुबेर के निवास तक पहुंच सके। वह अद्भुत हवाई रथ पुष्पक जिसे रावण ने एक बार जब्त कर लिया था, राम की सलाह के अनुसार कुबेर के पास चला गया। वशिष्ठ उनके शुभ चिंतक और कुल पुरोहित के चरणों को स्नेह पूर्वक दबाते हुए यहाँ तक कि जैसे कि देवताओं के स्वामी इंद्र बृहस्पति देवता गुरु के पैर दबाते थे, बहादुर राम उनके बगल में एक अलग आसन पर बैठ गए। इस प्रकार ये भारत की पहली महाकाव्य कविता वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड का 127वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण 128वां सर्ग 128 सर्ग। इंट्रोडक्शन। राम जी अयोध्या में पहुंच गए हैं, उसके बाद का हाल सुनो। ये लास्ट सर्ग है युद्ध कांड का। इसके बाद हमारा ये युद्ध कांड समाप्त होगा। इंट्रोडक्शन। एट द रिक्वेस्ट ऑफ भरता to take back the kingdom of Ayodhya, Rama accepts the offer and sits on his seat. Bharata and Rama take their bath and get down for the occasion. Rama, mounting on an excellent chariot, sails forth on a procession in the city, accompanied by Bharata, Shatrugna, Lakshmana, and Vibhishana.
9,000 elephants follow the procession with Sugriva and other monkeys mounted on them. Some attendants and musicians with their musical instruments walk in front of Rama's procession. The citizens of Ayodhya, horse flags on every horse, Rama turned to his paternal palace in Ayodhya. Sugriva orders four of his monkeys to bring water from four of in jars given to them. Some monkeys brought water from 500 rivers, as also from the four oceans for the purpose of the ceremony. Vasishtha, along with other Brahmins, as priests, caused Rama to be consecrated with that water. The virgins, ministers, warriors, merchants, the four gods as well as other gods sprinkled sap of all kinds of herbs on Rama. Vasishtha and other priests officiating the coronation ceremony adorned Rama with an auspicious and charming crown. Then Rama gives away presents to the priests as well as Sugriva and Nanda. Rama presents a pearl necklace to Sita, and Sita presents that necklace in turn to Hanuman. Rama further gives away presents to Vibhishana, Sugriva, Jaman and others on the occasion. Rama bids farewell to monkey. The glory of the epic is complemented in the end by Valmiki, placing his hallowed hand together on his head as a mark of salutation. Bharta, the enhancer of Kakeyi's happiness, spoke to the truly brave Rama, his elder brother, as follows. You gave this kingdom to me and treated my mother's words respectfully as you gave it to me. Then, in the same way, I am giving it to you again. I cannot carry this heavy burden any more than a young ox would sustain a load carried forward by a strong bull all alone. I think this vulnerable point in the form of a demonstration of the kingdom is difficult to be controlled as a broken dam seeping from its cracks when breached mammoth stream of water. O hero, the annihilator of enemies, I am not able to follow your path any more than a donkey would follow the gallop of a horse, or a crow would take up the chase of a wild goose. O mighty armed king, O a tree planted in the backyard of one's own house, even though grown big and difficult to climb with a huge trunk and large branches, does not yield fruits but dries up after flowering. He who planted it would not enjoy the fruit for which it was planted. This is the analogy applied to you. If you, as a master, would not indeed rule over us, your servants, you can understand the meaning. O Rama, today let the world see you when crowned like the sun with its glowing splendor shining brilliantly at noon. May you relax and wake up to the sounds of an ensemble of musical instruments, the thinking of ornaments strung with tinny bells and worn around the waist and anklets, as well as sweet invocation of songs. Look after you, lordship of bird here, as long as the stellar sphere revolves and so far as the earth is spread out. Hearing the words of Bharta, Rama, who conquered the cities of adversaries, accepted his words, saying, "Be it so," and sat on an auspicious seat. Therefore, on instruction from Satrughna, skilled barbers with gentle hand who can do their work with a good speed, encircled Rama all around. Bharta, having bathed first,
The mighty Lakshmana, Sugriva, the lord of monkey, and Vishnu, the king of demons, took bath. Rama had his matted locks, descended and bath. He stood there shining with a splendor adorned with a picturesque garland, smeared with sandals paste of various colors and cloths in costly raiment. Satrughna, the valiant and charming man, the promoter of Ikwansu dynasty, made arrangement for personal adornment of Rama and Lakshmana. Then all the noble-minded widows of Dasaratha, indeed, themselves personally adorned Sita beautifully. Thereupon, the delightful Kaushalya, who was affectionate of her sons, adorned with zeal all the wives of monkeys. Later on, the orders of Satrughna, the charioteer by name Sumatra, made his appearance, yoking chariot, two horses which were completely beautiful in all respects. Seeing the charming chariot, which emitted immaculate splendor like that of the sun, standing before him, the mighty armed Rama, the conqueror of hostile cities, ascended it. Sugriva and Hanumana, having splendor similar to that of Indra, the lord of celestial, after taking their bath, wore beautifully raiment as well as sparkling ear rings and started endowed with all types of ornament as well as charming earrings. Those wives of Sugriva, together with Sita, moved out, longing as they were to see the city. In Ayodhya, the minister of King Dasaratha, having placed the priest in their front, planned everything meaningfully. Ashoka, Vijaya, and Siddhartha, with a great concern, discussed about Rama's advancement and the prosperity of the city. You ought to do especially whatever is required for the coronation of the great-souled Rama, worthy of victory. Advising the priest in this way, all those ministers quickly started from the city with the intention to see Rama. The faultless Rama, mounting the excellent chariot, as Indra ascended the chariot yoke to green-colored horses, sailed forth to the city. Bharata took up the reins. Satrughna held the parasol on Rama's head. Lakshmana winnowed a fan. Vishnu, the king of demons, standing nearby, held a white fan, shining brilliantly like the moon. Then in the sky groups of sages, celestial along with the troop of the Maruts, the host of the god, praised Rama, and sweet reverberation was heard. Thereupon, Sugriva, the foremost of monkeys, possessing a great splendor, mounted an elephant named Satrunja, looking like a mountain. Assuming human form and adorned with all types of ornaments, monkeys sallied forth, mounting on the 9,000 elephants. Rama, the foremost among men, accompanied by sounds of conches buzzing in the earth and sounds of cattle drums, proceeded to the city of Ayodhya, having a series of palaces. Then the people of Ayodhya saw Rama, the chariot warrior, having a beautiful form, arriving on a chariot with the attendants walking in front. Felicitating Rama and greeted in reciprocation by Rama, they followed the great souled Rama, who was surrounded by his brothers, surrounded by ministers,
Brahmanas and other citizens, Rama shone with his own brilliance like the moon among the stars. That Rama drove surrounded by musicians having musical instruments, cymbals, and swastika musical instrument in their hand, walking in front and uttering auspicious songs. Men with grains of rice mixed with turmeric and thereby appearing gold in color, caused maidens along with brahmanas having bowls of sweets in their hand walked in front of Rama. Then Rama narrated about his friendship established with Sugriva, the power of Hanumana, and the great act of monkey to his ministers. Hearing the well-known achievement monkeys and the commonly known strength of the Brahmins, the citizens of Ayodhya were astonished. Then Rama spoke to his counselor about his meeting with Bhishma. After recounting it, the resplendent Rama entered Ayodhya, crowded with happy and joyous people together with the monkeys. Then the citizen hoisted flags on every horse. Rama reached the beautiful palace, paternal occupied by the Ikshvaku kings. Approaching and entering the palace of the great souled father, Rama, the prince, offered salutation to Kushalya, Sumitra, and Kakeyi, and spoke the following sweet and meaningful words to Bharata, the foremost among the retius. Give this great palace of mine, which looks excellent with the Shoka garden and consisting of pearls and cat's eye gems to Sugriva for its stay. Hearing those words of Rama, Bharata, having a true prowess, holding Sugriva by his hand, entered that house. Thereupon some men, as ordered by Satrughna, quickly brought oil lamps, beds, as also mats, and entered the house. Bharata of great splendor spoke to Sugriva as follows: O capable person, order the messenger to make arrangement for Rama's coronation. Sugriva then gave 4 golden jars encrusted with jewels to 4 leaders of monkeys. O monkeys, get ready to such a way that you await my orders tomorrow at dawn with your water jar filled with water from the 4 oceans respectively. The great souled monkeys, resembling elephants and going speedily like eagles, thus ordered by Sugriva, leaped quickly into the sky. Jambana, Hanumana, a monkey called Vagadarshi, and Rishva brought water jars filled with water. They brought water from 500 rivers with those jars. Thereafter, the energetic Sushena brought a jar adorned with all types of precious stones, filled with water from the eastern sea. Rishva brought water quickly from the southern sea in a golden jar covered with some stems of red sandal wood tree. Gavaya, having a pace as rapid as wind, brought cool water from the western ocean in a large jar set with the jewels. That virtuous Nala, who vied with Guruda, the king of birds, and the wind god in prowess, and who was endowed with all God's quality, swiftly brought water from the northern sea. Then Satrughna, accompanied by counselor, reported to Vasishtha, their chief priest, and his friend about water intended for Rama's
coronation brought by those foremost of monkeys. The elderly Vasishtha with diligence, along with other Brahmins on his side, prevailed upon Rama duly to occupy along with Sita on a seat made of precious stones. Vasishtha, Vamadeva, Kashyapa, Katyana, Swajana, Gautama and Vidya consecrated Rama, the tiger among men, with clear and fragrant water as the eight Vasus. Eight Vasus, Appa, connected with water, Dhruva, the pole star, Soma, the moon, Dhara, Anila, the wind, Pravaka, the fire, Pratyusha, the dawn, Prabhasha, the light. Vasishtha and others with much delight got him consecrated first with Brahmanas, officiant as priests, and by virgin ministers, varied as well as merchants sprinkling the sap of all kings of Mediation herbs with the four gods of guardians of the world standing in the air, and with all the gods assembled there, sprinkled the sap on Rama. With which crown long ago Manu, the emperor, was adorned while he was consecrated, and with which the kings followed in his line were successively adorned while they were coronated. That crown studded with precious jewels fashioned by Brahma at the beginning of creation and dazzling with splendor, being kept according to practice on a throne adorned with many kinds of precious stones in the council hall, studded with gold, graced with abundant riches, decorated and shiningly made with most charming jewels of various kinds, and thereafter Rama, duly adorned by that crown as well as jewels by the great soul Vasishtha and other priests officiating at the coronation ceremony. Shatrugana held over him a white and charming parasol, Sugriva, the king of monkeys, a white whisk, and Vishnu, the lord of demons, another whisk shining like the moon. Encouraged by Indra, the lord of celestials, the wind god presented to Rama a golden garland consisting of 100 lotuses, and which looked shining brilliantly. Induced by Indra, the wind god presented to Rama the king a chain of pearls adorned with gems and adorned with several types of precious stones. On that occasion of the coronation ceremony of the intelligent Rama, who was well deserving it, the celestial musician among the celestial gracefully sang, and troops of Apsaras, celestial nymphs, danced. On the occasion of that merriment of coronation to Rama, the earth was bearing a rich crop. The trees were laden with fruits and fragrant flowers. Rama, the foremost among men, first gave away to Brahmanas 100,000 horses and cows that have lately calved, as well as 100 bulls. Rama again gave a Brahmanas 30 crores of gold coins, all kinds of very costly jewels and raiment. Rama gave to Sugriva a beautiful chaplet studded with plenty of gems, looking like a beam of sunlight. The joyful Rama presented to Angada, the son of Vali, a bracelet worn on upper arm, conspicuously studded with cat's eye gems and adorned with jewels and gems. Rama presented to Sita an excellent string of pearls,
furnished with superior gems, shining like a beam of moonlight, too clean and beautiful raiment and lovely ornaments. Looking towards Hanuman, the monkey Sita, daughter of Janka, having taken off the pearl string from her neck, repeatedly caught the glimpse of all the monkeys and her husband. Looking at her, Rama, who was acquainted with the gesture of another, spoke to Sita as follows: Dear Sita, give the pearl necklace to a person with whom you are pleased and in whom the falling with sharpness, firmness, renown, dexterity, competence, modesty, prudence, virility, prowess, and intelligence are ever present. The black-eyed Sita gave that pearl necklace to Hanuman. Hanuman, the foremost among the monkeys, by wearing that necklace, which was as white as a heap of moonlight beams, shone brilliantly as a mountain silvered by a white cloud. All the elder ones among the monkeys and others who were foremost among the munis were hundred suitably with raiment and ornaments. Thereafter, Rama, the tormentor of enemies, having thought over presented articles according to their inclination to Mananda, Dvivda, and Nila. Rama, who was unwearied in action, then suitably honored Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jama, and all other eminent monkeys with desired objects and abundant gifts. All of them went back, delighted in mind, even as they had come. Thereafter, all those excellent, great-souled monkeys, offering their salutation to Rama and getting permission from him, returned to Kishkinda. Having seen Rama coronation ceremony, Sugriva, the chief of monkeys, after getting honored by Rama, entered the city of Kishkinda. The virtuous and the renowned king Vibhishana too, after obtaining the treasure of his race, kingdom of demons, followed by those foremost of demons, returned to Lanka. That renowned Rama, of a very generous nature, having destroyed his enemies and ruling the entire kingdom, enjoyed it with a great delight. Rama, affectionate of readiness, spoke to Lakshmana, the knower of readiness, as follows: O Lakshmana, the knower of what is right, rule with me this earth as ruled by the earlier king, with the help of any army installed in the office of prince, regent, bear like me the burden of sovereignty which was borne by our forefathers. When Lakshmana did not give his consent, even though being repeatedly entreated in all ways, nay, even being appointed to the office of prince, regent, the great souled Rama, therefore consecrated Bharata. Rama propitiated the gods by performing Pundarika, a Shamandha, Vajjapaya, and other sacrifices many times. Having enjoyed the kingship for 10,000 years, Rama performed 100 horse sacrifices, in which good horses were sacrificed and numerous gifts bestowed. That Rama, having his long arm reaching down his knees, having a broad chest and glorious, ruled this earth with Lakshmana as his companion.
obtaining a very great kingdom, the righteous Rama propitiated the Almighty with many kinds of sacrifices with the teamwork of his sons, brother and relatives. While Rama was ruling the kingdom, there was no widows to lament, nor there was no danger from wild animals, nor any fear born of diseases. The world was bereft of thieves and robberies. No one felt worthless, nor did old people perform obsequies concerning youngsters. Every creature felt pleased, everyone was intent on virtue, turning their eyes towards Rama alone. Creature did not kill one another. While Rama was ruling the kingdom, people survived for thousands of years, with thousands of their progeny, all free of illness and grief. While Rama ruled the kingdom, the talks of the people centered around Rama, Rama and Rama. The world became Rama's world. Siyavar Ram Jai Jai Ram. The trees there were bearing flowers and fruits regularly without an injury by pests and insects. The clouds were raining in time and the wind was delightful to the touch. Brahmanis, the priest class, Kshatriyas, the warrior class, Vishwas, the class of merchants and agriculturists, Shudra, the servant class, were performing their own duties, satisfied with their own work, and bereft of any greed. While Rama was ruling, the people were intent on virtue and lived without telling lies. All the people were endowed with excellent characteristics. All were engaged in virtue. Rama was engaged in the kingship thus for 1,000 years. In this world, whoever person reads and listens to this foremost lyrics derived from the speech of sage, which is endowed with gratuitousness, conferring fame and longevity, fetching victory to kings, and as written at first by Valmiki, that person is delivered from all misfortune. On hearing the narrative of his coronation in this world, a person seeking for sons gets sons, a person looking for wealth gets the riches, a king conquers the earth and overcomes his enemies. Even as Kushalya, the mother has Rama as her living son, or as Sumitra has Lakshmana, or as Kakeyi has Bharata, the woman likewise can become mother of living son, endowed with children as well as grandchildren, and thus become happy forever. On hearing this epic of Ramayana and all the episode of victory of Rama, who was unweary in his actions, a person gets longevity to life. He or she who hear with attention and with subdued anger this poetic composition done by Valmiki long ago, that person overcomes the difficulties. Whoever hears this poetical composition written by Valmiki long ago, they at the conclusion of their absence from home meet their relatives and get rejoiced. They get all the boons and entreated from Rama. All the gods get pleased with those who carefully listen to it. Whoever carefully listens to the epic in his house, all obstacles come to the end. A king conquers the earth. A person staying away from home fares well.
On hearing the epic, the men, men stretching women give birth to excellent sons. The adorer and the reader of this ancient epic gets relieved of all sins and obtains longer life. The epic is to be listened by warrior class after offering their salutation with their heads bent low from Brahmins every day regularly. There is no doubt that the listener and the reader of this entire Ramayana will get lordship and the birth of a son. Rama gets forever pleased with him who listens to or reads Ramayana daily. He is indeed the eternal Vishnu, the Lord of preservation. Rama is the primordial Lord, clearly placed before the eyes, the powerful Lord, removing the sins and the great arm, who has bowed on waters of the ocean of milk. Shesha, the serpent god, forming his couch, is said to be Lakshmana. Tell this epic which occurred long ago in this manner to those who ask for it fearlessly. Let there be happiness to you. Let the strength of Vishnu increase. By studying and listening to this epic, all the gods get appeased. By listening to this Ramayana, the four fathers forever get pleased. To those persons who transcribe with devotion this collection of poems depicting the story of Rama resident in heaven is assured. By listening to this highly meaningful and auspicious poetically composition, a person gets family, prosperity, augmentation in money and grain, superior woman, exuberant happiness, and all the acquisition of wealth on this earth. This narrative is to be listened invariably by good people seeking for wisdom, longevity, health, fame, fraternity, intelligence, welfare, and brilliance. Thus, this is the 128th chapter in Yuddha Kanda of Valmiki and the first epic poem of India. Here concludes the sixth book, Yuddha Kanda in Valmiki. वाल्मीकि युद्ध कांड का भोग पड़ गया, पूरे सर हो गए। जय जय राम राजा राम मेरे प्रभु राम राम राम, जय श्री 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 राम मेरे प्रभु राम राम राम। बोल सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। युद्ध कांड समाप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण का 6वां कांड युद्ध कांड। अब आएगा उत्तराखंड। जय श्री राम। जय जय राम राजा राम राम राम। ले भाई।